Hello students, welcome to MJC Learning. In this video, we are going to discuss the subject Secretarial Practice for Standard 12. And also, today we'll learn a new topic that is Working Capital. Working Capital. Students, before moving in depth, let us know what does it mean. Working capital is said to be that capital which is used to carry out the day-to-day business activities. It means working capital के वो अमाउंट होता है जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन रन करने के लिए चाहिए होता है बिजनेस में, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल, आपको बिजनेस सेटअप करना है और आपके पास 10 लाख है. तो स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए, क्या आप वो पूरा का पूरा 10 लाख बिजनेस एस्टैब्लिश करने में लगा दोगे? नहीं. एक स्मार्ट बिजनेसमैन वही कहलाता है जो उस 10 लाख में से कुछ पैसा बिजनेस के डे टू डे वर्क के लिए, मीन्स डेली के खर्चे के लिए रखेगा. दैट मीन्स बिजनेस में दो टाइप के खर्चे होते हैं स्टूडेंट्स. एक होता है बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए और दूसरा होता है बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन के लिए, दैट इज बिजनेस का डेली के खर्चे के लिए. जब हम अपने फंड्स को यूटिलाइज करते हैं फिक्स्ड असेट्स खरीदने को, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल, जो कि लॉन्ग टर्म होता है. ऑन अदर हैंड, कुछ फंड्स जो हमें चाहिए होते हैं शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए. यस स्टूडेंट, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, जैसे कि रॉ मटेरियल्स खरीदने, फोन बिल्स पे करना, बिल्स कुछ पे करना, वर्कर्स का डेली वेजेस उनको देना, पैसे देना, स्टेशनरीज खरीदना. तो ये सब चीजों के लिए हम कहते हैं डे टू डे ऑपरेशंस. और ऐसे फंड्स जिनको हम यूटिलाइज करते हैं शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल. So students, working capital refers to a firm's investment in the short-term assets. Factors affecting working capital requirement. Students, the firm must estimate its working capital very accurately, means perfectly, because excessive use of working capital result in wastage of capital, and shortage of working capital affects smooth flow of the business. So the finance manager must estimate right amount of working capital, and also he must keep in mind the following factors before estimating the amount of working capital. So the very first factor is nature of the business. Here students, the amount of working capital required is depend on the nature of the business. Nature of the business means type of the business. Example, manufacturing business, trading firms, big retail stores, they require large amount of working capital. Second factor is size of the business. Here, depending on the size of the business, the amount of working capital determines the need of the business. Here, size of the business means how large or small the business is. जितनी ज्यादा बड़ी कंपनी होगी उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल भी रिक्वायर्ड होगा, लेकिन जितनी छोटी कंपनी होगी उतना कम वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है स्टूडेंट्स. So depending on the size of the business, the working capital is determined. Next, third factor is volume of sales. Volume of sales here means number of goods sold. So the volume of sale and the size of working capitals are directly related to each other. Yes, student.
As you all know, volume of sale, it means number of goods sold. If the volume of sale is high, then the amount of working capital that is required will be high. If the volume of sale is less, then the amount of working capital is required in the firm will be less. Next factor is production cycle. Students, production here it means converting the raw materials into finished goods. So student, if the production cycle period is long, then the requirement of working capital will be more. And if the production cycle is short, then the requirement of working capital will be less. यहाँ स्टूडेंट्स ये पॉइंट ये कहलाता है कि जितना ज्यादा एक गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए समय लगेगा, टाइम लगेगा, तो उतना ज्यादा फर्म को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी होगा उतना ज्यादा. लेकिन एक गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए जितना कम समय, जितना कम टाइम लगेगा, उतना कम रिक्वायरमेंट होगा वो कंपनी को वर्किंग कैपिटल का. नेक्स्ट, fifth factor is business cycle. Student, a business cycle consists of a boom period and the recession period. Boom period, it means the growing period of the company. Yes, student. If the sales are very high, so in that time the company has to spend a lot of money on raw materials, wages, etc. So on such period, it requires more working capital. But on the other hand, that is on the recession period is said to be decline period, a period where company is not successful. So on such period, the sales declines as people tend to buy less. Thus, in this phase, the company needs less working capital. Next factor is terms of purchases and sales. Students, यहाँ purchases and sales means खरीदना और बेचना. अगर कोई कंपनी मटेरियल्स परचेस कर रहे हैं क्रेडिट पे और गुड्स सेल कर रहे हैं कैश में, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, तो वो कंपनी को लेस रिक्वायरमेंट होता है वर्किंग कैपिटल का. हाँ स्टूडेंट्स, कंपनी क्या कर रही है, बिजनेस में मटेरियल्स लेकर आ रही है, रॉ मटेरियल्स लेकर आ रही है क्रेडिट के बेस पे, लेकिन जब वो गुड सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, किस पे, कैश पे, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, तो यहाँ पर कंपनी को लेस रिक्वायरमेंट होता है वर्किंग कैपिटल का. लेकिन अगर ऐसी कोई कंपनी है जो कैश देकर मटेरियल परचेस कर रहे हैं और क्रेडिट पे गुड्स सेल कर रहे हैं, तो वैसे बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है. सो डिपेंडिंग ऑन द credit and cash of the purchase and sale of the goods, the working capital determines. Next factor is credit control. Those firms which sell goods on cash require less working capital, but those who provide credit facility means those company who sells goods on the credit basis, they require more working capital. Next is growth and expansion. If a company is growing and expanding its business activities, then it will need more working capital to maintain its growth. Example, कंपनी पहले 100 टायर मैन्युफैक्चरिंग करती थी, जिसपे उनको 5000 डेली का अमाउंट हैज अ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट था. लेकिन अभी कंपनी एक्सपांड करने का सोच रही है, मीन्स 200 टायर मैन्युफैक्चरिंग करने का सोच रहे हैं,
तो क्या स्टूडेंट्स डेली का उनका 5000 अमाउंट हैज अ वर्किंग कैपिटल ही रिक्वायर्ड होगा? नहीं, यहाँ उन्हें ज्यादा अमाउंट दैट इज 5000 से ज्यादा हैज अ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा. So students, if a company is growing and expanding, they require more working capital. Second last factor is management ability. Students, if there is a proper coordination between production and distributions of the goods, then the requirement, that is the need of working capital, is reduced, is less. Last factor that affects the requirement of working capital is external factors. If the banks and other financial institutions provide funds whenever the company requires, then the working capital, the need of that company's working capital is reduced. So students, these were the 10 factors which affects the working capital requirement. Thank you.